Hey guys, if you're not able to watch my long form content of podcast, here are some short form clips for you to enjoy. So now that you've identified your space with your family and your business, your son is the center of your universe. We see a lot of unhealthy children. You mentioned strongly that I want to give him the best opportunity for fitness, and that word came in very strongly. A lot of our Indian children are not healthy. You're a father today. You run a very successful fitness business. What is your advice to India from their children's upbringing? Right from, you said you put your son to sleep at 8 o'clock. I used to put my son to sleep at 8 o'clock. When I tell my clients put your children to bed early, oh no, 10:30, 11 is a normal Mhm. time. Can you give us a message as one of India's leading fitness gurus on how important it is to bring up our children correctly, how important it is for parents to lead by example? That's the most important thing. If you think about it, they are the future of the country. They need to be fit. And we got them into this world. It is our responsibility to make sure that we give them the best environment possible. What all we need to do is give them the environment. Everything else they will pick up and they will do what you do. So, very important for us to walk the talk, lead by example. We can ask them to play a sport or to go for a run in the morning. I mean, of course, when they grow up a little bit, we can ask them to do whatever we want to do. But if we don't do that ourselves, they will just not be interested in it. So we have to be out there doing those things ourselves. For example, I would be very happy while Angad has all the independence in the world to do whatever he wants, but I would be happy if he pursues a sport. For that, what's important today? Today, it's important that his dad plays a sport. So I play basketball once a week. I go for swim a couple of times a week, and I make sure that I compete at some level. Of course, I'm not competing at a very high level right now, but wherever there has to be some competition, some sport in my life, so Angad can see that my dad's getting me a medal at home, and he's so excited about it. And That's that so is how. that's very inspirational because if your child, constantly tell your child you need to come first in class, you need to come first in running race, you need to be good in basketball. But if as a parent you're kind of leading by Yeah, example, so that's so inspirational. that's what's needed. I mean, we need to wake up early if we want them to wake up early. We need to wake up early. So now that you've established everything, आपका business set हो गया, आपका बच्चा भी है आपके पास and he's the center of your universe. हमारे देश में सब लोग आईआईटी जी क्लास जाते हैं, पढ़े 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 करने का है. How important is fitness? You're one of the health gurus of the country. तो आपके दिमाग के अंदर या आपका सोचने के अंदर कि when the members come to you, चलो ठीक है जिम मेंबरशिप या फिटनेस मेंबरशिप ले रहा है, how do you inspire them as parents to work out? How do you inspire them to take care of the children? What is the routine? आपका जो अंगन का जो routine होता है, let us know how you can inspire India. I think this is one of the most important things that we can do as parents क्योंकि kids our children वो इस country का future है. सही बात. They are gonna define. लेकिन आईआईटी क्लास जाने का तो वो भी अच्छा स्मार्ट होता है, लेकिन कोई नहीं देखता फिटनेस. Fine, I mean, nothing against education in pedagogy and things like that. मेरे को ये लगता है कि अपने बच्चों की लाइफ में से स्पोर्ट को कभी मत जाने दो. लेट द स्पोर्ट बी देयर क्योंकि स्पोर्ट आपको ना सब कुछ सिखा देता है. कैसा? अगर आप टीम गेम खेलते हो हाँ. तो आपको समझ में आता है कि आप लोगों के साथ काम कैसे करो. हाउ डू यू बी रियली धोनी कोऑर्डिनेटेड. जैसा मास्टर लीडर. आईआईटी नहीं गया लेकिन लुक एट हिम. Look at him, like how he makes decisions on the fly. लेकिन अगर मेरा बच्चा था मतलब धोनी जैसा नहीं है, बहुत शाय है, बहुत पतला है, वीक है. लाइक इवन आई वाज वेरी वीक, आई वाज ऑन द वॉलीबॉल टीम. सो व्हाट शुड पेरेंट्स लुक फॉर टू एडवाइज द चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स? I एक तो think. टीम आप बोल रहे हैं ना, हम्म, टीम मैनशिप होता है इन टीम yeah. स्पोर्ट्स. बाकी पेरेंट्स को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा क्या करे. पेरेंट्स को ये करने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ आई डोंट प्ले अ स्पोर्ट मीन आई कैन आस्क अंगद as much as I can to go and play basketball and do go for a run and things like that. बट वो करेगा तभी जब वो मुझे करते हुए देखेगा. नाउ he has all the independence to be whatever he wants to be at a later point. He can choose his career. पर मुझे लगता है कि आई विल बी हैप्पी इफ़ ही परस्यूज अ स्पोर्ट. उसके लिए क्या ज़रूरी है?
कि मैं कोई स्पोर्ट खेलूँ। उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं कहीं से मेडल जीत के उसके लिए लाऊं, सो दैट ही थिंक्स दैट दीज अरे आर द थिंग्स पापा दैट मेरे लिए मेडल लाया। पापा मेरे लिए मेडल लेकर आए। और मेडल कैसे आता है? आप स्पोर्ट खेलो, आप उसमें जीतो, और आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेडल आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो सुबह जल्दी उठे, तो उसके लिए मुझे उसको नहीं उठाना है, उसके लिए मुझे खुद उठना है। नहीं तो फिर ये मैं भी लेट उठूंगा, वो भी लेट उठेगा। ये तो सही बात है, क्योंकि मेरा बेटा जो है 10 साल का है, वो कराटे कर रहा है। मैं भी कराटे कर रहा हूँ बहुत साल से। मैं अभी दूसरा कराटे का शितोरियो स्टार्ट किया, शोतोकान में हम्म। ब्राउन बेल्ट पहुंच गया। अभी शितोरियो कर रहा है। अभी मेरा ऑरेंज बेल्ट है और मेरा सन का बेल्ट है पर्पल। हम्म। पापा आप तो ऑरेंज बेल्ट है, मैं तो पर्पल बेल्ट हूँ, कंपटीशन हो गया। आई एक्चुअली एज अ फादर फेल्ट आई हैव टू डू बेटर, Exactly. At some point, they'll start giving us competition, like you said. बट वी हैव That's टू बी great. इंस्पिरेशनल। We have this. It starts here. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हेल्दी खाना खाए, और अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा खा रहा हूँ, तो वो नहीं खाएगा. He eats from my plate right now. डू यू स्मोक? No, I don't. डू यू ड्रिंक? Very rarely. बट नॉट इन फ्रंट ऑफ योर किड? I mean, I do it in front of him because I think as long as I have a healthy relationship with alcohol, I would let him see it. The problem, however, gets to the point where the relationship with alcohol is bad. My father was an alcoholic, and everything that I saw with alcohol was like really bad. It was just full of खतरनाक। stress. खतरनाक मतलब बस, if you ask my mother, सुन के stress हो जाएगा उनको. And which is why I feel I can't keep him away from things like that. I can't keep him away from having to see people drinking alcohol. बट Or यू आर ऑल्सो डिसिप्लिन, आप बहुत डिसिप्लिन है डाइट के अंदर। yes, I सो mean, even if I drink, I can't drink more than a pint. उसमें I'm done. यू गॉट योर डन। बट क्या ऐसा इज दिस ट्रू कि जो जिम ट्रेनर्स होता है या फिटनेस ट्रेनर्स या फिटनेस गुरुज होता है, वो इतना डिसिप्लिन होता है या विजनरी है उनका तरीका, जो हाउ टू बिल्ड द बॉडी एंड ऑल, दैट दे नो दैट द नशा ऑफ अल्कोहल इज नॉट हेल्पिंग देम इन देयर वर्कआउट द नेक्स्ट डे और फॉर द नेक्स्ट 10-15 days? So is this a common thing among all your trainers and all, that alcohol consumption is kept to a low because it affects the body? Yeah, our trainers are, by design, very healthy and fit people. They also work very hard. दिन में इतनी सारी classes लेनी पड़ती हैं पूरे time. They are on their toes. They also have to be mentally sharp because we are very focused on customer experience as a brand. They can't really, I mean, people can't really, in that job, people can't afford to be drinking alcohol regularly. क्योंकि at least, I mean, I know there is, I'm sure you will support this point. मैंने अपने केस में वो देखा है कि अल्कोहल थोड़ा सा भी पीने के बाद नींद खराब हो जाती है सबसे पहले. True. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेक अप डिहाइड्रेटेड, डोंट फील फ्रेश, योर वर्कआउट इज नॉट दैट ग्रेट, सो इट्स योर एंटायर नेक्स्ट डे इज गॉन. एंड इफ योर डे इज गॉन एज अ ट्रेनर, then that's just impacting so many other people. Hey guys, if you've enjoyed this clip, then click here and watch the full episode. And don't forget to subscribe, because your body is the most expensive real estate and I'm your real estate agent.